So hi guys, I hope you all are doing well, just like I'm doing. So continuing from the last video which I did, we are just going to be continuing this series basically of what you should be doing in college. तो चलो let's get started with that. तो अभी last video तो मेरा था कि what are my recommendations for you to be doing in the first year of your college. Continuing that, I will be giving my recommendations to do in the second year of your university, basically what you should be doing and what you should avoid, everything like that. So the first point would be कि second year you cannot do anything new or anything different. कि मान लो अगर आप फर्स्ट ईयर से ही काम वाम करना चालू कर दिए, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था वैसे ही अगर आपने चालू कर दिया काम करना, if you have done all that, if you have started working on some sort of research, if you have like started working on 2 to 3 different fields which you think are very much in demand in the market or which you would like doing, तो अगर आपने कुछ ना कुछ काम चालू कर दिया तो सेकंड ईयर में भाई लिटरली वही काम आपको कंटिन्यू करना है. दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग न्यू और नथिंग डिफरेंट यू कैन डू. तो काफी स्टैटिक सा साल है देखा जाए तो. बट देर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक यू शुड बी लुकिंग एट इन द सेकेंड ईयर. तो दैट थिंग वुड बी to decide your place of work. So let's say if you have decided to do, let's say masters या PhD ऐसा कुछ आपने decide कर लिया, मान लो आपने you have decided, then ideally you should be sure of what country you would be going in, and if you have decided on a country, what city or what particular place you would be going in as much as possible. Because if you have clarity regarding that, right, you can basically do a lot of due diligence beforehand instead of just deciding at the last moment and then being confused about what to do, where to do. So if you have decided to do masters or PhD, then you must know which city, which country, etc. you're going into. अगर आपने मान लो डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई मास्टर्स वास्टर्स का तो कुछ नहीं, रिसर्च आप, इवन दो आई वुड से कि रिसर्च पे आपको ध्यान देना चाहिए, बट लेट्स से इफ यू डोंट, आई मीन आई कांट फोर्स यू टू डू दैट. So if you don't decide to do on research, if you decide to continue with the job as well because of whatever reasons, at least you should know which city you would like to work in. हाँ correct, which city. So you can choose any big city which is there in India. Let's say कोई भी बड़ा शहर कुछ भी आप ले लो जो आपके स्टेट में हो या आपके एरिया में हो. लेट्स से नॉर्थ इंडियन हो तो गुड़गांव गुड़गांव ले सकते हो, साउथ में रहते हो तो बैंगलोर हैदराबाद कुछ भी ले सकते हो, महाराष्ट्र के हो तो मुंबई ले सकते हो, पुणे ले सकते हो. बट और या तो आप नॉर्थ के हो आप बैंगलोर ले लो, लाइक इट डजंट मैटर, एनी पिक एनी सिटी बेसिकली, विच एवर सिटी यू थिंक शुड बी बेस्ट फॉर यू और वेर यू वुड लाइक टू गो एंड लिव एंड वर्क and where the jobs are existing basically for whatever you're doing. So pick that city and then try your best to basically, अब आप जैसे थर्ड ईयर वगैरह में जाओगे धीरे से, so you should be sure of which city you are going into and you should try to pick a job or apply for the jobs or try to find the job in that city itself. Try not to wing it in that sense ki I'll just see wherever I'll first job I'll just take wherever I'm getting and then I will see. Please do not do that. It will cause you a lot of confusion later on, and the compounding of everything which happens, right? So like compounding of money, you all should be knowing. It's basic formula which you were taught in ninth standard or something. Similar to that, there is a compounding of your relationships as well, I would say, or compounding of the surrounding where you're living in. This may, if you are living in a same city, right, then you would be in a much better place than a person who is just moving from point A to point B, city A to city B. It would be you would save a lot of money. You would, like, your life will be a lot more stable in that sense, and you would be able to devote your energies to much better purposes, much more creative things in life. If you are, yeah, if you have a plan on where you want to stay or what you want to do in that particular place, तो आप सिटी वगैरह तो आपको सोचना ही चाहिए सेकेंड ईयर में कि आप कौन सी वाली चुननी है. दैट इज वन थिंग विच आई वुड हाईली रिकमेंड. उसके अलावा सेकेंड ईयर भाई वो फ्लो में चलता रहेगा, तो देख लो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मजे तो करने ही रहते हैं थोड़े बहुत. एंड एज लॉन्ग एज यू कीप वर्किंग, राइट, तो एक फर्स्ट ईयर में आपको डायरेक्शन चूज करना है, सेकेंड ईयर में यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पीपल जो लेट्स से मान लो कोई सेकेंड ईयर का ही है. If there's a guy from second year who just glanced upon my video and he's like, I did not do all that during the first year which you had recommended, what should I do now? तो मैं बोलूंगा कि whatever you, it's fine, completely fine, it's no problem at all. But you should just check out my other video जिसमें मैंने अपने फर्स्ट ईयर वाले रिकमेंडेशन दे रखे हैं.
एंड एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट विथ ऑल ऑफ दैट इन योर सेकेंड ईयर, क्योंकि आप मान लो सेकेंड ईयर में भी हो एंड इफ यू गो एंड अप्रोच अ प्रोफेसर saying that I would like to start some research, who like you can pick anyone basically, whoever you think has the best rapport with you. I don't think they are gonna say no to a guy from the second year, क्योंकि hey, you have 3 years, so if you fit in any sort of project, you can be very helpful to the PhD scholars who are working there, to the professors who are getting new projects. So it's very highly likely that you are going to get some or the other chance at research. तो आप वो सब सेकेंड ईयर में चालू कर सकते हो, जो फर्स्ट ईयर में आपको आइडियली करना चाहिए था, बट छोड़ो कोई बात नहीं. So yeah, that's all for this video. Let me know what you feel. And again, I'm summarizing these two things. First point is start thinking about where you would want to start your career and where you would want to live long term, and try to get the job as per that. अभी नहीं मिल रहा तो छोड़ो भाई, but try to get as per that. बहुत पैसा बचाओगे, बहुत सुकून मिलेगा और सही रहेगी चीजें, वरना कहाँ जाना है क्या करना है यही सोचते सोचते आधा टाइम तो निकल जाएगा, कुछ और कर नहीं पाओगे. एंड सेकेंड, कि अगर आप लोग, yeah, if there are many of you who would not have done all these things which I had mentioned during your first year itself, तो अभी start कर लो भाई, कोई देरी नहीं हुई है, you have a lot of time in your hands, so start them during the second year itself and it's completely fine, so no problem at all. तो अभी चलो गाइस, ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो है बट सेकंड ईयर में और कुछ करने को है नहीं ज़्यादा, इफ ट्रूथ बी टोल्ड. तो अभी के लिए इतना ही, ये सब करते रहो. बाकी थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, मास्टर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए कैसे करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा मैं, बहुत नॉलेज है इसके बारे में मेरे पास. तो एकेडमिक्स के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी ये हो, तो कमेंट सेक्शन में चाहिए तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एज वेल regarding any particular topic where you would want any idea. I can help you with that as well. And please do share with, either you can basically benefit from it yourself if you're in that age category, या तो सबका कोई छोटा भाई छोटी बहन, कोई आस पड़ोस में कोई छोटे बच्चे तो होते ही है who can benefit from this, so you can share it to them or their parents. दोनों को फायदा होगा और डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी सबके लिए, और पता चलेगा कि हम क्या करना है, क्योंकि आधे लोग को तो वही नहीं पता होता कि करना क्या है. करने का जज्बा जुनून सब कुछ होगा, एटलीस्ट पता तो हो क्या करना है. सो आई कैन डेफिनेटली हेल्प विद दैट. Cholo, seems good for this video. Okay, guys, bye.